Hi friends, my name is Manish and I'm the executive chef of the Oberoi Gurgaon and we are right now at 361, the award-winning restaurant of the hotel. आज हम आपके लिए एक बहुत simple dish लेके आए हैं. We are making a salad which is very light, very refreshing, but full of flavors. Basic ingredients like raw mango, इसको कच्चा आम भी बोलते हैं. We'll take some cucumbers, we'll take some chilies, some prawns which are poached in very simple stock, and a dressing which is made from jaggery or palm sugar, some chilies, some lemon juice, and few spices. So let's make the dish. पहले हम लोग इसकी ड्रेसिंग बनाएंगे. थोड़ा सा चॉप गार्लिक, not much but little bit. Sugar syrup. Sugar syrup is to balance the flavors of the lime. A little bit of sweet chili sauce. A little bit of fish sauce. हम थोड़ा सा इसमें फ्रेश मिंट डालेंगे. अगेन मिंट को कोशिश कीजिए कभी भी चॉप नहीं करो, सिर्फ हाथ से तोड़ेंगे तो उसका फ्रेशनेस इसमें रहता है. अदरवाइज हम जब इसको चॉप करते हैं बोर्ड के ऊपर तो सारा फ्लेवर्स वहीं चला जाता है. एंड वी हैव सम फ्रेश कोरिएंडर लीव्स थ्रोन इन लाइक दिस. इसको मिक्स करते हैं, एक इमल्शन बना लेते हैं. अभी इसमें जो हमने नहीं डाला है वो है फ्रेश लेमन जूस. टेक सम फ्रेश लेमन और इसको हम लोग इसका फ्रेश लेमन का जूस निकाल लेते हैं. ऑफ कोर्स हम लोग सीड नहीं डालेंगे. थोड़ा सा इसको क्रश करेंगे ताकि फ्लेवर्स सारे मिल जाएं. मे बी लिटिल बिट ऑफ स्प्रिंग अनियन ऑल्सो इसी स्टेज के ऊपर. थोड़ा सा स्पाइस और चाहिए तो मे बी ऑफ कोर्स चिली कैन बी चेंज्ड, इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन आप क्या स्पाइस लेवल खाने की कोशिश कर रहे हैं. लिटिल बिट ऑफ लेमन, लिटिल बिट ऑफ चिली. अगेन थोड़ा सा क्रश करके मिलाने की कोशिश करते हैं. Now comes the prep part for our vegetables. So we have raw mango. इसको पील कर लेते हैं. हम चाहते हैं कि मैंगो को क्रिस्पनेस इस डिश के अंदर आए along with cucumber. Raw mango is done more or less. And we have a simple peeler जिससे कि आप इसको little threads के अंदर निकाल सकते हैं. जैसे हम इसको लेंगे, thin juliennes निकाल लेंगे. Again these peelers are available in the market very easily. You don't have to really कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. So that's raw mango. Then comes the cucumber. Same thing. So we take out long shreds. So हमारे ingredients are more or less. So हमारे raw ingredients more or less salad के लिए ready हैं. पर अभी हमने prawns को नहीं पकाया. So let's get the prawns. Normal stock. थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मे बी वी कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ मिंट लीव्स जस्ट सो दैट वाटर इज मोर फ्लेवरफुल. थोड़ा सा स्प्रिंग अनियंस, मे बी लिटिल कोरिएंडर. वी वेट फॉर वाटर टू बॉईल. सो हम प्रॉन्स को पोच करने वाले हैं. प्रॉन्स को कभी भी बॉईल नहीं करना चाहिए. अगर आप प्रॉन्स को बॉईल करोगे तो टफ हो जाएंगे, रबरी हो जाएंगे. सीजनिंग करना ज़रूरी है तो थोड़ा सा सॉल्ट. एज यू कैन सी वाटर has started simmering and all you have to do is take the prawns and add them here. Depending on 4 to 5 pieces and just simmer. So you can see the beautiful prawns are now, color is changing. As they're cooking, they're becoming light and pinkish. Cut it slightly from here. As you can see, the prawns are just about to cook, probably 30 more seconds. So 30 more seconds and prawns are cooked. So our main ingredient is ready. Now all we have to do is take the prawns and add them into the salad. One, three. And this is good for one portion. हमारे कुछ ingredients जो हमने पहले नहीं डाले थे वो अब डालेंगे, like crisp red onions. Onions will give you a nice texture, little bit sharpness, which is very particular or very peculiar to onions. Some more spring onions, and let's mix the salad now. So as you see, prawns were a little warm जब हमने इसमें डाले, right? And they will absorb all the flavors of the dressing here. They will be nice. We should add a little bit of crushed rice to give little texture. So that we will add here, and बाकी we'll use in garnish. Maybe थोड़ा सा और mint leaves. Yeah? And the salad is ready. So let's get a plate and we plate the food.
put the prawns here. So the salad comes in here. So if you see, the beauty of the salad is the beautiful colors which come in, the beautiful textures which are here. We're going to add some more of crushed rice on top to give the final crunch. Now the final garnish, some fresh mint leaves, some coriander to give the extra freshness, and of course anything green looks great. And our salad of raw mango, cucumber and prawns is ready.